Hello guys, myself Abhishek Singh. Today I have started a new class and which is very required for them who wanted to work in a IT sector and which is very helpful for also. So now we are start and I would like to request you that is very helpful information. So please pen down and if any issue then you can ask me in a comment box also. So आज से नई क्लास स्टार्ट हो रही है आईटी सेक्टर की। काफी लोगों ने मुझसे पूछा था और कहा भी था कि सर आईटी से रिलेटेड वीडियो बनाएं। तो मैंने ये वीडियो आज से स्टार्ट की है और ये बहुत हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो आईटी सेक्टर में वर्क करना चाहते हैं। आईटी सेक्टर में आपको पता है आज के डेट में कितनी डिमांड है। सो उनके लिए सभी के लिए हेल्पफुल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ वी आर स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। हमें स्टार्ट से स्टार्ट कर व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है इसके बारे में बताना है। तो हम मेंशन करते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज दैट in this process we are verify the all functionality of the application who is developed by the developer। जो डेवलपर ने डेवलप की हुई एप्लीकेशन है एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, हम उसकी जो फंक्शनैलिटी को जो उसने बनाया है उसको हम चेक करते हैं कि दैट इज अ वर्केबल, दैट इज एनी इशू और नॉट, किसमें कोई इशू तो नहीं है। दैट इज ऑल टेस्टेड बाय अस एज अ टेस्टर। दैट इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। So you can say, you can mention it also, in this testing we are verify the required functionality of the developed application. So that is a software testing. So now we are talking about manual testing. What is manual testing? In this process, we are verify the all functionality of the application without automated tools. That is a manual testing. इस प्रोसेस में हम जो भी एप्लीकेशन की सारी फंक्शनैलिटी है उसको हम विदाउट ऑटोमेटेड टूल्स के, मतलब आगे मैं आपको टूल बताऊंगा कौन कौन से टूल्स होते हैं जहां पर हम डायरेक्टली कमांड डाल के हम एक बार में चेक कर सकते हैं कि कहां पर इस एप्लीकेशन में इशू है या फिर कहां पर इस सॉफ्टवेयर में इशू है, कहां पर कोई बग है। तो वो ऑटोमेटेड टूल्स हो जाता है और विदाउट हम जब करते हैं तो वो एक मैनुअल टेस्टिंग कहलाता है, जहां पे हम खुद वेरीफाई करते हैं कि चीज देखते हैं, हर फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं। दैट इज अ मैनुअल टेस्टिंग। सो नाउ वी आर टॉक अबाउट, यू कैन से ऑल्सो कि इसमें लिख सकते हैं आप, इन दिस प्रोसेस वी आर वेरीफाई द ऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन विदाउट यूजिंग एनी ऑटोमेटेड टूल्स। दैट इज अ मैनुअल टेस्टिंग। नाउ वी टॉक अबाउट what is automation testing। so automation testing क्या है? तो same, when we are verify the all functionality of the application with help of automated tools, जहां पर हम हेल्प लेकर एक ऑटोमेटेड टूल्स का हम हेल्प लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया कमांड डालने के बाद डायरेक्टली हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई इशू है, इस एप्लीकेशन में इस सॉफ्टवेयर में कोई इशू है। जहाँ पर हमने डायरेक्ट कमांड डाली और डायरेक्ट हमने चेक किया कि यहाँ पर कोई इशू तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है, तो वो हम उसे कहते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग। सो यू कैन पेन डाउन ऑल्सो, इन दिस टेस्टिंग वी वेरीफाई any application the all functionality with help of any automated tools। that is a automation testing। so that is the automation testing। so now we talk about what is SDLC। so SDLC क्या है इसके बारे में आप बताते हैं। सबसे पहले SDLC क्या है? SDLC है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। नाउ आप इसमें कई बार पूछा जाता है, कई बार लोग पूछते हैं कि कई बार आप इंटरव्यू में जाएंगे तो पूछा जाता है कि SDLC क्या है। तो SDLC एक प्रोसेस है जहां पे हम सॉफ्टवेयर डेवलप लाइफ साइकिल जिसे हम कहते हैं फुल फॉर्म में, ये एक प्रोसेस जो स्टार्ट किया जाता है वो सबसे पहले क्लाइंट से एक रिक्वायरमेंट गैदर किया जाता है कि कस्टमर को रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब कोई क्लाइंट है जो अपनी एप्लीकेशन बनवाना चाहता है, देन वो सबसे पहले बिजनेस एनालिस्ट होते हैं या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, वो सबसे पहले क्या करता है कि वहां से क्लाइंट गैदर कर, वहां से रिक्वायरमेंट गैदर करता है कि क्लाइंट से कि सर आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। सो इन दिस प्रोसेस ए प्रोजेक्ट मैनेजर और बिजनेस एनालिस्ट gather a requirement from the client side and they create a SSR document। इसमें एक SSR document create होता है जिसके अंदर सब mention होता है as per client requirement, everything mention in a SSR document। and उसके बाद क्या होता है कि and that डेवलपर उसमें देख के SSR को देखते हुए वो उस एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। देन डेवलपर हैज डेवलप्ड क्रिएट एप्लीकेशन फ्रॉम द ऑल रिक्वायरमेंट हुज एंटर इन अ SSR document। तो सब कुछ उसमें जो SSR डॉक्यूमेंट है उसमें जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं वो मेंशन किए रखते हैं, उसके अनुसार जो डेवलपर है वो डेवलप करता है एप्लीकेशन को। आफ्टर दैट, आफ्टर द डेवलप एप्लीकेशन we as a tester we are verify the application and that is a SDLC process। so you can say, you can mention it again, in this process a project manager or business analyst gather a requirement from the client side and they create SSR documents regarding of client requirement, and after that developer developed the application and then as a tester we are verified। so that is the SDLC process। now phase of SDLC, there are 6 phases in SDLC।
which is mentioned here. First phase is requirement gathering, as per saying कि हम पहले required gather करते हैं as a business analyst जो है वो required gather करता है from client side, then we create application, means that is a designing phase, that is second phase, and third phase implementation phase, and fourth phase testing phase, that is a tested by us, that is our work, and fifth phase is delivered phase, and sixth phase is a maintenance phase. So please mention it and pen down. There are six phases. First phase is requirement gathering, second phase is designing phase, third phase is the implementation phase, fourth phase is testing phase, and fifth phase is a delivered phase, and last phase is the maintenance phase. So please pen down. Now we talk requirement gathering. What is a requirement gathering? In this process, we gather two information or requirement from the client side. What he want in under his application. Like example that customer said he want to create a e-commerce application. So he wanted to some user story, like he wanted to create a man section, he wanted to create a footwear section, he wanted to create a add to cart section, he wanted to create like a gateway section. So that is all the user story. So we are mentioned in SSR document as a project manager or a business analyst, that's work. And he mentioned in SSR document that's what is want in client in under his application, that is mentioned in requirement gathering phase. So that is all. So requirement gathering phase में client requirement पूछी जाती है कि client के required क्या क्या है, वो ये जो SSR document है उसके अंदर mention किया जाता है. SSR document हमेशा business analyst या फिर project manager जो होता है वो बनाते हैं. सो उसके बिहाफ पे वी आर डिजाइनिंग अ एप्लीकेशन, कि डिजाइन कैसी होगी एप्लीकेशन वो उसके बाद डिसाइड होता है. ठीक है, दैट इज अ रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज. सो यू कैन मेंशन requirement gathering. In this phase we are gather to requirement from client side. After this phase we can create a design of application or software, that is a requirement gathering. What is a designing phase? In this phase we create application or software as per client requirement, that is a designing phase. You can mention it again. In this phase, we create application or software on basis of client requirement. In this phase, we create all features, all user story as per client requirement. जैसे कि मैंने बताया कस्टमर चाहता है कोई ई कॉमर्स साइट बनाना, जैसे कि वो कह रहा है कि मुझे अमेजोन की साइट बनानी है. ही वांटेड टू क्रिएट अमेजोन साइट, लाइक मान के चलिए. So he wanted to create a Amazon in the under application like a woman section, man section, footwear section, home and kitchen section. So that is all his user story. So he wanted to all user story like that. So ये सब mention होता है SSR document में. तो डेवलपर इसको देखते हुए ही डेवलप करता है एप्लीकेशन. सो दैट इज ऑल डिजाइनिंग फेज. जैसे कि मैंने बताया इन दिस फेज वी क्रिएट ऑल फीचर्स एंड यूजर स्टोरी एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट. सो दैट इज ऑल, दैट इज अ डिजाइनिंग फेज. So now what is the implementation phase? In this section we installed and implement all the features who's required from the client side, that is the implementation phase. और इसी बिहाफ पर हम जो इम्प्लीमेंट करते हैं इसमें इंस्टॉल करते हैं फीचर्स को सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर. ये सारा प्रोसेस जो आता है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है, दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन. सो नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट इज अ टेस्ट केस. Testing phase. What is a testing phase? In this process, we are verify the all functionality of the application. इस प्रोसेस में हम इस जो एप्लीकेशन क्रिएट होती है उसकी जो टेस्टिंग करते हैं कि उसके अंदर कोई इश्यू तो नहीं, कोई बग तो नहीं है. That is all process in under of testing phase. So you can mention in this phase as a tester we test application, we verify the client requirement functionality as per client requirement. जो क्लाइंट ने बोला है वो सारी रिक्वायरमेंट इसके अंदर फुलफिल है, कोई ऐसा कोई इशू तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है. सो फॉर दिस वेरीफाई दिस एप्लीकेशन वी क्रिएट अ टेस्ट केस. हम टेस्ट केस क्रिएट करते हैं इसके लिए एंड फाइंड द बग इफ वी फाउंड. तो जैसा कि बताया इस टेस्टिंग फेज में वी आर क्रिएट अ टेस्ट केस एंड इफ वी फाउंड एनी बग देन हम इसे असाइन करते हैं अगेन डेवलपर को कि इसे फिक्स करने के लिए. तो ये है टेस्टिंग फेज. सो नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट. सबसे पहले आप मेंशन कर लीजिए इन दिस फेज एज अ टेस्टर वी टेस्ट एप्लीकेशन, वी वेरीफाई द क्लाइंट रिक्वायरमेंट फंक्शनलिटी एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट. For this verify application we create a test case and find the bug if we found. So now we talk about what is delivered phase. In this phase we
deliver the application after the verify all functionality as per client requirement. जैसा कि मैंने बताया कि after test case creation, after testing a phase, if we found any bug, then we assign a developer कि हम उसमें mention करते हैं कि उसे fix करे इस bug को. अगर उसमें bug नहीं मिलता, if we did found any bug, then we delivered application you can say that we can live the application. तो हम उस टाइम लाइव कर सकते हैं एप्लीकेशन को अगर उसमें कोई बग नहीं है तो. So that is a delivered phase. Now we talk about please mention first again in this phase we deliver this application after the verify all functionality as per client requirement. ठीक है. Now what is a maintenance phase? In this phase after the deliver the application and client want to some changes in his application, like you created a e-commerce site, e-commerce application, and now customer want to some changes in his application. Now he wanted to create a new section like a home and kitchen section. So you have to be change, you have to be add in this application, that is under of maintenance section. And if you talk about if as a client he found any bugs, so you have to fix this bug. So that is all under his maintenance section. That is all. So कह सकते हैं कि in this phase after deliver the application, if client want to changes any features, then we will change the functionality, or found any bugs in this application, then we will fix it also. That's all is under maintenance phase. So ये last phase है SDLC का, जो मेंटेनेंस फेज कहते हैं इसको. तो यही हम लास्ट में आफ्टर डिलीवर के, जब डिलीवर हो जाती है एप्लीकेशन, उसके बाद हम मेंटेनेंस के लिए इसमें हम देखते रहते हैं इस चीज़ों को, और एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट इसमें हम समय समय पर चेंजेस भी करते रहते हैं. तो ये है हमारा मेंटेनेंस फेज. तो साथियों आज का ये जो क्लास है, जो पूरी क्लास थी वो SDLC की, दैट इज फिनिश्ड. So now we are starting with the next video with the SDLC, software testing life cycle. So अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक and subscribe. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you.